and CLAS for inviting me on a very important topic, and that is emerging technologies, AI, and Indo-Pak, and the future of it. And I will divide this topic into two parts: emerging technologies and then Indo-Pak warfare, independently, for easy understanding, and then the future warfare. So in the 10 minutes, probably I can only capture this. Rest we can discuss in the question answer session. First of all, as a researchers or as students or everybody, emerging technology, that there is a question actually which is very, very great. What are the emerging technologies? So I would suggest a list of emerging technologies, which are 18 emerging technologies given by the US National Science and Technology Council, which is available on the internet, PDF, free download. These are 18 emerging technologies which are vital for the national security. Vital for the national security. And if you see that list, you can see that is AI, IoT, cyber, 3D manufacturing, integrated networks, drones, quantum computing, PNT, position, navigation, timing, satellites. So you can see, oh, these 18s are all related to air, all are related to aerospace. So it means national security is directly linked to aerospace in the eyes of that agency, US Science and Technology Council. So from here I can infer, and you must infer, that those emerging technologies which are vital for the national security are generally related to the aerospace. It means in future the wars would be in aerospace. In aerospace, the aero means air and the space means space. Air is just 100 kilometers of altitude. This is aero. After that, it's a space. So once I say aerospace, it means from ground till n limit number of kilometers. Aero till 100 kilometers space. So future wars will be in aerospace domain. Now I can give you 2-3 examples, very recent examples. If you see the spider web of the Ukraine attack on the Russia, in which they attacked the Russia with the drones, the autonomous drones, of few $1,000s, but that damaged the $8 billion of bombers of Russia, strategic bombers, nuclear bombers. So by using so much small amount of effort, you can damage the most. Then Iran-Israel case. Israel attacked the Iran and get the air superiority. And the drones which were actually assembled inside the Iran were used to actually attack the Iran. So drones were used, air was used. And remember, once the air superiority is gained, then land forces, all other forces cannot move. Because the one who has the air superiority is actually now dominating the war. Now, after understanding the emerging technologies and importance of aerospace, I will come to the PF, Air Force, and what happened on 6th, 7th May. Pakistan Air Force is always cognizant of importance of emerging technologies and incorporating those emerging technologies in their warfare, in their doctrine. If you see the trend, and if you ever do the research on the comparison of Indian Air Force and Pakistan Air Force, you can see the trend. We have always been procuring very high quality equipment, starting from F-104, F-86, the top of the line fighters of that era, then F-16s, then Mirages, then JF-17, then J-10C, and the coming series of them. So, and compared to India, so we are always cognizant of the technologies. But important is how to use these technologies. Rafale is also a very good technology, by the way. It is one of the best technology ever in the world. But India could not use it because it could not employ it. Employ means it could not incorporate it in its operations. So, what happened on 6th or 7th May and how PF used the emerging technologies in that operation to counter the enemy which is at a much numerical superiority, not the quality superiority, numerical superiority, more number of aircraft. 100 plus aircraft coming from here, 40 something aircraft from Pakistan Air Force, and 100 from the Indian Air Force. So it seems that 100 should dominate. But why these 40 dominated? And how come that nil kill from the 40 and there were 6 kills in the 100? How come it happened? Because of the emerging technologies used. And that we call it multi-domain operation. Now I will explain in a minute or so what is multi-domain operation for easy understanding. Rahman sir have given me very tight time, so I am getting very fast on it. You have to finish it. Yes. Multi-domain operations when you use all your assets and all your technologies in air or in ground, in space,
collectively to make it a single potent force, that is MDO, multi-domain operations. In this case, we used not only the aircraft, we used the cyber, we used the electronic warfare, we used the airborne early warning radars, we used the ground radars, we used the space, all collectively, and above all, we used the BVMs, which is PM-50, beyond visual range missiles, which is another technology which was not available to the enemy. So once this all combined together, then it becomes a force, and then you see the result that was 6-0. And what happened next day? Indian Air Force grounded. So it means you have the air superiority. Control of the air was with you, with the Pakistan. And once the air superiority is with any country, that is actually dominating the war. So in my opinion, actually the war finished in 55 minutes of that encounter. 55 मिनट्स के बाद जंग फाइटिंग तो खत्म हो चुकी थी क्योंकि हमने एयर सिक्योरिटी ले ली थी, वहाँ इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी। और जब आपके वो ग्राउंड है, जब अटैक ही नहीं कर सकते हैं, आपके पास सिक्योरिटी आ गई है, तो फिर तो नीचे तो मूवमेंट बहुत टेक्निकल होती है। तो फिर 4 डेज की जो वॉर है वो एलोकेटेड है ड्रोन्स और मिसाइल, लेकिन एक्चुअली वी विन द वॉर इन 55 मिनट्स बाय दैट एनकाउंटर ऑफ 6-0। नाउ कम टू द 8-9 May episode, Indo-Pak War 2025. Now is the second part of the topic. Why India switched to drone warfare and missile warfare? Why they have not attacked again? जनरली तो ये होता है कि मुझ पे मेरे जहाज गिरे तो मैं दोबारा अटैक करूं, काउंटर अटैक करूं with more force, so that I should also get a 6-0 or 7-0. But they have not attacked us because actually that was grounded. They realized that they cannot compete with Pakistan in air force, so they switched to the drone and the missile warfare. ये एक और टेक्नोलॉजीज आ गई दोबारा से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर वॉरफेयर, क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर में जो मैंने आपको 18 बताई है उनमें से 2 ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इंडिया स्विच टू दैट साइड एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग द ड्रोन्स। अच्छा, ड्रोन वॉरफेयर भी फ्यूचर की वॉरफेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। दे स्टार्टेड सेंडिंग अस द किलर ड्रोन्स। ड्रोन्स की क्योंकि टाइप्स होती हैं, फिर उसकी लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी होते हैं एआई के। तो किलर ड्रोन इज द वन व्हिच इज एक्चुअली द सुसाइडल ड्रोन, and they sent us around 80 plus drones। जैसे पिंडी में भी आया, स्टेडी में, लाहौर में गिरे, उसमें से कुछ हमने एनकाउंटर कर सके, कुछ नहीं कर सके, कुछ हिट कर गया। एंड देन दे स्विच टू द मिसाइल वॉरफेयर। मिसाइल वॉरफेयर इज अनदर कमिंग वॉरफेयर ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि ये भी आगे इसी के साथ चलेंगी, व्हिच इज हाइपरसोनिक एंड हाई वोल्टेज मिसाइल। तो उसमें खैर एनकाउंटर हुआ, लेकिन अब क्वेश्चन आता है दैट व्हाई सीज फायर? भैया आपका 6-7 मई को एनकाउंटर हो चुका है, फिर ड्रोन वॉरफेयर चल रही है, मिसाइल वॉरफेयर, सीज फायर क्यों हो गया अचानक 10 मई? क्वेश्चन तो बनता है ना जहन में। एक्चुअली इंडिया लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द वॉर। जो एस्केलेशन डायनामिक्स थी वो इंडिया के हाथ से निकल गई। दे लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द वॉर एंड एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज कंट्रोलिंग द वॉर। कंट्रोल वाज विद अस, और मेजर कंपोनेंट इसमें जो कंट्रोल ऑफ वॉर था ना वो एयर सुपीरियरिटी। एयर सिक्योरिटी हमेशा जिसके पास होती है, अब आप एग्जांपल लें, मैंने आपको दोबारा दूंगा कि ईरान में एयर सिक्योरिटी इजराइल के पास थी। इससे इजराइल हर शहर पे अटैक कर रहा था उनके, और ईरान डिफेंड नहीं कर पा रहा था। इसी तरह अब ये जो रिसेंटली थाईलैंड वाला इशू है कंबोडिया का, आप उसका देखें, एयर सिक्योरिटी थाईलैंड के पास थी, कंबोडिया के पास नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते, एयरफोर्स ही नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एयर सिक्योरिटी जिस मुल्क के पास होती है उसके पास एक्चुअली वो विन होती है। लास्ट पार्ट, फ्यूचर वॉरफेयर क्या होगी? हमार साहब ने तकरीबन मेरा सवाल का जवाब कवर कर लिया अपने प्रीएम्बल में। फ्यूचर वॉरफेयर विच इज अ 5th जनरेशन वॉरफेयर के 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, जो तीनों आई एम श्योर के रिसर्च करने वाले हैं। पहला इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दूसरा साइबर वॉरफेयर, तीसरा मीडिया वॉरफेयर, जिसको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो हमार साहब ने बड़ी अच्छी लड़ी इसके दौरान इस पूरे मार्का हक में माशाल्लाह। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमने बात करी, फ्यूचर वॉरफेयर विल बी फुल ऑफ टेक्नोलॉजीज, इट विल बी एरोस्पेस, इट विल बी ड्रोन्स, इट विल बी मिसाइल्स, समथिंग लाइक दिस। साइबर वॉरफेयर उसको असिस्ट कर दी होगी, साइबर वॉरफेयर में भी पाकिस्तान बहुत अच्छा लगेगा, दे परफॉर्म वेरी वेल। और थर्ड इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड द मीडिया वॉरफेयर, जो कि मेरा ख्याल है कि इंडिया से भी मच बेटर, मच मैच्योर्ड एंड मच कंपोज्ड इन गिविंग द ओपिनियंस। So this would be the future warfare for which we have to prepare also. Right. Thank you so much, Raza Haider साहब. In 1 minute, अगर आप explain कर सकें, जो एक question है वो मैं अभी address करना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे questions हैं. But technology क्या सिर्फ पाकिस्तान के पास ही थी? क्या जो emerging technology, cyber technology और
सारी चीजें थी, क्या ये इंडिया के पास नहीं थी इस कॉन्फ्लिक्ट में? इंडिया के पास थी, इंडिया उनको एम्प्लॉय नहीं कर पाया। मैं आपको अच्छा। एग्जांपल दूं कि साइबर तो इंडिया के पास है और हमारे पास भी, दोनों की तरफ से अटैक हुए और काउंटर हुए। जो एयर पे उनको डैमेज हुआ ना, वो राफेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, बट दे कुड नॉट एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एम्प्लॉय होता है कि हाउ टू डवटेल दैट टेक्नोलॉजी विद अदर टेक्नोलॉजी सो दैट इट कैन अच्छा। ऑपरेट इन अ कोहेसिव मैनर। तो टेक्नोलॉजी अकेले काम नहीं करती, अकेले काम नहीं करती, वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट। दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान प्रिवेल, क्योंकि अगर आप जैमिंग करते हैं ना, जो कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द टू एयरक्राफ्ट या उस एयरक्राफ्ट की ग्राउंड के साथ, आप उसको कट कर दें तो वो सोलो में ऑपरेट नहीं कर सकता कुछ जहाज। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान उनसे एज कर गया। और तीसरा जो इंडिया अभी लैग कर गया ना, वो सिंक या कोऑर्डिनेशन थी आपस में ऑफ ऑल एजेंसीज इंक्लूडिंग ग्राउंड से, एयर से और स्पेस, वो उनको लिंक नहीं कर पाया आपस में, जो पाकिस्तान ने सुपरबली कर। और ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाउ आई विल गिव द फ्लोर टू मलिक कासिम मुस्तफा साहब। हाउ डू यू सी एआई यूज, जो इसका ऑपरेशनल यूज हुआ पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में, एंड वेयर डू यू थिंक दिस इज गोइंग? Thank you.